डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन आउट. So let's we start the new chapter, the triangle and its properties. I think you are very friendly with the triangle. This is the lesson for class 7th, grade 7th. It is from NCERT on the base of CBSE pattern. So let's we start the lesson. A triangle you have seen in a simple closed curve made of three line segment A, B, B, C, AC. Okay, it has three vertices. Now let me take my pen also. If you don't know about the vertices, so let me tell you, the first vertex is the A, second is C vertex, and third is B in this triangle ABC. Clear? Sides are AB, BC and CA. This is AB and this is BC and this one is the side CA. Angles. Angle BAC, middle letter you have to take. This one is angle A, BAC and this one is the angle, इसको ले लेते हैं पहले, ABC and this one is BCA or ACB. That's clear about the angle. Vertices are ABC, no problem. The side opposite to the vertex A is BC. बताइए, साइड इस वर्टेक्स A का अपोजिट साइड कौन सा है? अपोजिट, दैट इज BC. B वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन सा है? AC. राइट नाउ अपोजिट सीख लीजिए. एंड द वर्टेक्स C का अपोजिट साइड कौन सा है? AB. क्लियर हो गया ना? सो नाउ you know how to classify triangles based on the sides and angles. Very good. In class 6, on the based of sides, you know scalene, isosceles and equilateral triangle. And on the based on angles, it's acute angle triangle and obtuse angle triangle and the right angle triangles. Very nice. So you know about the triangle. My question is, write the 6 element, the 3 sides and 3 angles of triangle ABC. Very good. You can easily answer through this figure. Now second question for you, side opposite to the vertex Q of triangle PQR. If you draw a triangle PQR, correct, and this one is PU, it is Q and it is R. What is your question? Vertex Q, side opposite to the vertex Q. Vertex Q का side opposite कौन सा है? PR. So now you have to draw a triangle LMN and triangle RST. You have to give the answer in the comment box. I will respond you. Question number 3 also you have to do. Now let's try to explore something more about the triangle. Correct? इस फिगर में भी आपको क्या करना है? ट्राइंगल्स को साइड्स और एंगल्स के बीच पर डिसाइड करना है. सपोज इन दिस फिगर 8 सेंटीमीटर, टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो आई थिंक इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. वेरी गुड. And this one is hypotenuse 10, this is 6 because this one is the right angle triangle and this side is 8 centimeter. When you verify in the Pythagorean triplet, it will be right angle triangle. So please verify all triangle, कौन सा आपका right angle है, कौन सा obtuse है, कौन सा isosceles है, and कौन सा equilateral है. So something more about the triangle we discuss. First है median of a triangle. Given a line segment, you know to find its perpendicular bisector by paper folding. Very simple. Cut out a triangle ABC, a piece of paper. Suppose I cut out this triangle. Consider any one of its sides, say BC, by paper folding. अब हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से पेपर को कट करने के बाद इसको यहाँ से ब्लू लाइन से फोल्ड करेंगे. Locate the perpendicular bisector of BC. Perpendicular bisector of BC. It means BC side divide into two equal part. BD is equal to DC. The folded crease meet BC at D, its midpoint, then we join AD. Okay. The line segment AD joining the midpoint of BC to its opposite vertex. ये देखिए opposite vertex. A is called a median. So AD is the median of triangle ABC. कंसीडर साइड ए बी एंड सी एंड फाइंड टू मोर मीडियंस. ये देखिए मैंने इस फिगर में भी वही किया है. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो ए डी इज द मीडियन. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, सो बी ई ऑल्सो ए मीडियन. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ऑफ सी एफ ऑल्सो ए मीडियन. करेक्ट? यू कैन गिव आंसर. क्वेश्चन इज हाउ मेनी मीडियंस कैन ए ट्राइंगल हैव? वेरी नाइस. 3 medians a triangle can have. Second question for you. Okay,
Let's we take another topic, the altitude of a triangle. Altitude. Suppose make a triangular shaped cardboard ABC, place it upright on a table. देखिए हमने एक कार्डबोर्ड से ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल ABC. हाउ टॉल इज द ट्राइंगल? ट्राइंगल कितना हाइट पर है? The height is the distance from vertex A to the base BC. This height is called altitude. So from A to BC you can think of many line segment, which among them will represent its height. The height is given by the line segment that starts from A, comes straight down to BC and is perpendicular to BC. This line segment, suppose it is AL, come in this figure, this AL is perpendicular to the BC, that means AL is the height or altitude. Correct? So these questions for you, how many altitudes can a triangle have? आप अपनी कॉपी में ट्राइंगल बना करके उस परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पता लगा सकते हो. सो प्लीज सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन एंड राइट डाउन ऑन योर क्लास वर्क और होमवर्क, जो भी कॉपी में आप करना चाहते हो. दीज टू टॉपिक्स आर वेरी यूजफुल टू यू. फर्स्ट है मीडियन एंड सेकंड है एल्टीट्यूड, जिसे हम हाइट भी कहते हैं. ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.